We have done with the Gymnosperms part of the kingdom Plantae, as their predominant stage was sporophyte. Again, I'm reminding you that Pteridophyta, Angiosperms and Gymnosperms, their predominant stage is sporophyte. And in case of whereas the Bryophyta is concerned, Bryophyta have they had gametophyte stage as predominant stage. So let us talk today about the last topic of the kingdom Plantae, that is angiosperms. Angiosperms. It is also a Greek word, and Greek word angios, derived from angios, which means vessel, and sperma means seed. So the seeds are enclosed in the ovary, and this angiosperm is flowering as well as seeded plants. Angiosperms are flowering as well as seeded plants. So they are flowering as well as seeded plants. They do have seeds and also flowering. As far as the species are concerned, angiosperms are further divided into two groups. One group is monocot, other group is dicot. And on the basis of presence of cotyledons, they have been divided into two categories. The angiosperms having one cotyledon are called monocots, and the angiosperms having two cotyledons are called dicots. As far as gymnosperms are concerned, they do have multiple cotyledons, but their integument was one. They were unitegmic, but these are bitegmic. So angiosperms are bitegmic, and as far as the monocot is concerned, there are about 50,000 species of angiosperms containing monocots or single cotyledon, and there are about 220,000 angiosperms which contains two cotyledons are called dicots. So let us start with the difference between monocots and dicots. How could we differentiate monocots and dicots? So in case of monocots, you would have, like, this is cotyledon, one cotyledon, and here you would get an embryonal axis like this, as I have completely discussed in morphology. This is the embryonal axis, and these are two cotyledons. And the point which is towards chereza part is called plumule. Here is a plumule, and the point which is towards micropyle is called radicle, and radicle gives rise as root, and so far as the plumule gives rise the shoot. Then there are epicotyle, hypocotyle, cotyledonary node. These things I have already discussed. So in case of monocots, you would see the cotyledon or seed like this, and in case of the dicots, you would you would see embryo like this. So this is one difference. Second difference is the vascular bundles of or vascular tissue, xylem and phloem of monocot. It is scattered. It is scattered all over this, like this. The vascular bundles of monocot is scattered. They have scattered
vascular bundles. Number 2 difference. And in case of dicots, their vascular bundle is arranged in a ring. They are arranged in a ring. This is the second difference between monocots and dicots. This one, they have ring arrangement of vascular bundles. Ring arrangement of vascular bundles. Number 3rd point, if we go towards the flowering structure, you will get this type of flowering arrangement. This is called a trimerous. This is called trimerous. You will get the trimerous arrangement. So flowering is trimerous. You can see the flowers, and on seeing the flowers, you could easily differentiate between monocots and dicots. Then in case of this, you will get pentamerous flowering arrangement of petals. You would get this type of flowering arrangement. This is called pentamerous. Pentamerous. And number 4th point, in case of monocots and dicots, if we would like to see their venation of leaves, this is this type of leaf. In case of monocots, you will find like this. This is called parallel venation. They do have parallel venation. And in case of this dicots, you would see the reticulate venation. This type of venation you will find in case of dicots. Reticulate. Number 5th point, if we would like to see the root arrangement, roots. In case of monocots, you can see the fibrous roots. This type of root is found in monocots, and in case of dicots, you would find a taproot. This is another main difference between monocots and dicots. So if we see again their arrangement of leaves, you would see in case of monocots, you would see the leaves are isobilateral and they are parallel to the stem. Consider this is a stem and this is a leaf. They are parallel to each other. They are parallel to each other. Parallel to each other, and this condition is called isobilateral. Or in case of this, जो stomata होते हैं, the stomata are scattered all over the leaf. यहाँ पे जो इसके पास स्टोमेटा होते हैं वो सारी जगह पे, सारे लीफ पे scattered होते हैं all over the leaf. In case of this one, you would see this type of leaf arrangement. That means here the leaves are perpendicular to the stem. Here they are forming 90-degree angle with this. This is 90-degree angle, and this one is found in dicots, and here they are parallel to each other. Then this arrangement is found in monocots. Clear? In case of one more difference I would like to give you. In case of monocots and dicots,
Stomata, as I have told you, stomata in case of monocots and dicots. In case of monocots, stomata are scattered all over. They are scattered all over. Here, stomata. But in case of dicots, the stomata are on the lower epidermis. They are on the lower side of leaf. Here, you would find the stomata on lower side or lower epidermis, not all over the leaf. Number 7th point I would like to discuss here, and later on we would take the angiosperms in detail, their life cycle. So, as far as the shape of God cells, in case of monocots, they are dumbbell shaped. They do have God cells of dumbbell shaped, and in case of dicots, they do have God cells kidney shaped or bean shaped. Kidney shaped or bean shaped. So let's go now. I hope you understood what are monocots and what are dicots. Single cotyledons containing are monocots, angiosperms, and two cotyledon containing plants are called dicots. Number second point, we would like to go towards the history. Angiosperms originate from in the Cretaceous period of Mesozoic era. मैं लिखूं यहाँ पे Angiosperms originated in Cretaceous period of Mesozoic era. And this Cretaceous period is called Golden Age of Angiosperms. This is history. So this Cretaceous period is called Golden Age of Angiosperms. In case of habitat, they are found in all types of conditions. They are found in aquatic regions also. They do found in terrestrial. Most of the angiosperms are terrestrial. They are xerophytic, and they are also like cactus. They are also parasitic. Parasitic में example दूंगा Cuscuta or Cuscata plant, which is a parasitic. And we do have another habitat which is called epiphytic or epiphyte. Epiphyte, the condition is that the plants are growing over the branches of plants fall in order to get sunlight, not for nourishment. In order to get sunlight, they would grow on the branches of the other plants. This condition is called epiphyte, as I have told you in morphology many times. So as far as the habitat is concerned, they can be found in everywhere. Hilly areas also they can be found in even Antarctica में भी इनको हम पा सकते हैं. ये बात होगी इनके हैबिटेट की. अगर हम स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं लेमना. दिस इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. In case of tallest angiosperm, we do have Eucalyptus.
eucalyptus, which grows up to 114 meters. If we talk of the width, as far as width is concerned, width wise or width wise, we do have banyan tree. Banyan tree which takes the area of about 1 kilometer, as the banyan tree, as like this, they do have the support of prop roots. prop roots इनके पास होते हैं, और इस तरीके की ब्रांचेस आपको मिले बहुत सारी मिलेंगी. You could not find the main root of the banyan tree so far as the width is concerned. So as for now, we would like to go towards the reproduction part. Reproduction in case of angiosperm is again spore formation, but the spores or pollen grains, they are being separated by the different agents. So let us see the structure of flower or structure of angiosperm in case of flowering plants. So let us have flower. This is our thalamus or receptacle. Then we have the first whorl, which is called calycus. Then we have innermost whorl, which is called corolla. Then we have one more whorl inner to this is our androecium. Then again we do have like this structure, and this is called this is gynoecium. Then if I would like to draw again one pair also, this is our calycus and this is our corolla. Then if I would like to draw it like this, we would get the structure of a flower. So in case of angiosperms, your male androecium is called a male here, male, and gynoecium is our female. This would be our male sporophyll or microsporophyll. This will act as megasporophyll. मैं बता दूंगा आपको कैसे ये स्पोरोफिल बनाएंगे. मैं आपको पहले बता दूं, जो फ्लावर है, फ्लावर हमारे पास है, इट इज अ कंडेंस्ड शूट, नंबर 1. नंबर 2, इट इज अ मॉडिफाइड सिटम. और जो इस पे ये वर्म्स लगे हुए हैं, कैलिकस, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये हमारे पास है मॉडिफाइड लीव्स. याद रखिएगा, as I have completely explained in the morphology chapter, morphology of flowering plants. Consider it is a stem. ये एक स्टेम है. स्टेम के पास होते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स. क्लियर? जो चीज नोड से निकलती है उसको लीफ कहते हैं. तो ये हमारा एक लीफ है, जो यहाँ पे आपका कैलिकस है. ये दूसरा लीफ निकल के आया,
जो हमारा कोरोला बनेगा, कैलिकस। मैं बता दूं कैसे। फिर एक और वर्ड हमारे पास यहां से इस नोड से निकली है, जो हमारा क्या है, जो हमारा है स्टेमन। फिर यहां से एक और चीज निकल के आ रही है जो हमारी क्या है, गाइनोशियम या कार्पल, या बोलेंगे पिस्टल, या बोलेंगे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ऐसा करेंगे, दिस इज अ स्टेम, और इस स्टेम पे क्या लगे हैं, लीव्स लगे हैं। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, बिल्कुल प्रेस करेंगे, तो आप इस तरह की शक्ल आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो ये लीफ था, इसको बन गया, इसको हम नाम देंगे यहाँ पे फ्लावर में कैलिकस। तो ये कैलिकस क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड लीफ। ये भी मॉडिफाइड लीफ है, ये भी मॉडिफाइड लीफ है, ये भी मॉडिफाइड लीफ है। तो जिगर मेरा, मैंने आपको बताया था इन जिम्नोस्पर्म्स स्पोरोफिल, मैंने बोला एक स्पोरोफिल एक स्पेशल लीफ होती है, स्पेशल लीफ होती है, जिस पे हम देखेंगे किनको बेटा, स्पोरेंजिया को। किनको देखेंगे, स्पोरेंजिया को। स्पोरोफिल इज अ लीफ, और लीफ जिन पे हम क्या देखेंगे, स्पोरेंजिया। तो बेटा ये स्टेमन जो मेरे पास है, ये क्या है, ये तो मॉडिफाइड लीफ ही है ना। तो मॉडिफाइड लीफ जो है ये मैं इस्तेमाल करूंगा एज मेल गैमेटोफाइट और मेल स्पोरोफिल, और इस फीमेल वाले हिस्से को मैं एज ले लूंगा फीमेल स्पोरोफिल। क्लियर। मेल वाले को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल वाले को बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। समझ लेना, फिर से मैं बोलूंगा, दिस इज अ फ्लावर, फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट एंड इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। ये वाला हमारे पास स्टेम है, और जो नोड से स्ट्रक्चर्स निकलती हैं उनको हम लीव्स बोलते हैं। तो ये सारे लीव्स हैं इसके। जब हम इसको प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ये इस तरीके की शक्ल हमारे पास आएगी, या ये हमारे पास इस तरीके की शक्ल आएगी। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये हमारा कैलिकस, कोरोला, स्टेमन एंड गाइनोशियम, इस तरीके की स्ट्रक्चर। दो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम and the leaves or this one, correct, the parts of flower are modified leaves. So we can take these two types of leaves in case of reproduction, because sepals का अलग काम है, calyx का अलग काम है, corolla का अलग काम है, प्रोडक्शन का, अट्रैक्शन का काम है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th में आपको खाली ओवरव्यू देखना है, और डिटेल्ड चैप्टर जो आपको इसमें आएगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो आपको 12th के पार्ट में मिलेगा। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नाउ वी डू हैव two parts. One, we do have this one. This is our male part and it is called stamen. Stamen, number one, it is called androecium. Number three, it is called male part. Number four, it is our microsporophyll. मैं बता दूं क्यों, microsporophyll. This stamen has two parts. This swollen part is called anther, and this cylindrical part is called filament. I have gave you the detailed types of filaments, types of anthers, everything we have discussed. And again we have this type of structure, which is our
pistil or carpel. This is carpel. Carpel is called gynoecium. It is a female part. It would be our मेगास्पोरोफिल. क्यों इसको मेगास्पोरोफिल कहेंगे? क्योंकि इसी के अंदर होते हैं मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजिया जिनको हम नाम देते हैं बाद में ओव्यूल्स. अभी समझ लो पूरी बात को. ये मेरे पास है मॉडिफाइड लीफ. ये भी मेरे पास है मॉडिफाइड लीफ. जब ये मॉडिफाइड लीव्स हैं तो इनके पास स्पेशल स्पोरेंजिया लगे होंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्पोरोफिल्स. लेकिन माइक्रो बनाएगा मेल को हम माइक्रो कहते हैं और फीमेल को हम मेगा कहते हैं. We do have three parts of this. We have stigma. This one is called style, and this one is called ovary. The ovary later on changes into fruit, and the megaspores will later on change into seeds, which are called ovules. Try and understand. अगर मैं इसका लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूं, मैं अगर मैं इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेता हूं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, तो हमें इस किस्म की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी. Like this, we would get this type of structure in which we get 4 microsporangia. These are microsporangia, and this one is called, this section is called pollen sac. This is our pollen sac. समझ लेना पूरी बात को. इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास क्या बनेंगे बेटा? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे. तो एक माइक्रोस्पोर को मैं बाहर निकाल लाऊंगा. दिस इज आवर माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर जो है, ये अभी तक जो हमारे पास ये प्लांट था, इट इज स्पोरोफाइट, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोफिल है. स्पोरोफिल इसको भी कहते हैं. तो ये हमारे पास होगी स्पोरोफाइट प्लांट होगा हमारे पास. तो यहाँ पे जो एंथर है इसका सेक्शन ले लिया, और पॉलन सेक के अंदर आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगे. फिर इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जिनकी मियोसिस से, इनकी मियोसिस करेंगे हम. मियोसिस से माइक्रोस्पोर हमारे पास आएगा, और माइक्रोस्पोर को ही हम पोलन ग्रेन कहते हैं. इसी को हम पोलन ग्रेन कहते हैं. क्लियर? इसको हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे. यही पोलन ग्रेन जो है, इसके पास इस 2 तरीके की स्ट्रक्चर होगी. पोलन ग्रेन यही माइक्रोस्पोर है एक, और दूसरा होगा इसका वेल डिजाइनड एक और कोटिंग होगी इसके ऊपर पोलन ग्रेन की. व्हाट इज पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन इज अ माइक्रोस्पोर, और पोलन ग्रेन ही हमारा मेल गैमेटोफाइट है. क्यों? क्योंकि इसी पोलन ग्रेन के पास ही होंगे गैमीट्स. दिस पोलन ग्रेन इज कैरिंग gametes. So this designer structure is called our axion, and this circular structure is called our intine. Inside the intine we would get
types of cells. We would get two types of cells. One cell is inside pollen grain की मैं बात कर रहा हूं, और यहाँ पे एक जगह पे हार्ड कवरिंग नहीं होती है जहां से पॉलन ट्यूब ये बनाएगा. इस वाले एरिया को हम जर्म पोर कहते हैं. जर्म पोर कहते हैं. समझ लेना पूरी बात को. मैंने एक एंथर का सेक्शन लिया. इस तरह दिखेगा आपको. 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होंगे. माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनेंगे. एक माइक्रोस्पोर मैंने ले लिया जो बाद में पोलन ग्रेन कहलाएगा. पोलन माइक्रोस्पोर के अंदर जो हमारे पोलन ग्रेन है, इसके 2 कवरिंग होती है. एक बाहर वाली डिजाइनर कवरिंग जिसको एक्साइन कहते हैं, और अंदर वाली कवरिंग को इंटाइन कहते हैं. इंटाइन के अंदर हमारे पास बनते हैं ये वाले, इनको हम बोलेंगे 2 मेल गैमीट बन जाते हैं. 2 मेल गैमीट्स बन जाते हैं, जिसको हम जो होते हैं जिसको हम बाद में बोलते हैं जनरेटिव फेज. और ये वाली सेल जो बन रही इसको बोलेंगे हम ट्यूब सेल. ट्यूब सेल एंड 2 मेल गैमीट्स ऑफ जनरेटिव फेज. जनरेटिव सेल्स बोलेंगे या जनरेटिव सेल. चलो एक ही होती है जनरेटिव सेल और एक होती है ट्यूब सेल. समझ लेना बात को. ट्यूब सेल को हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं. वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं और इसको हम जनरेटिव सेल भी कहते हैं. एक को जनरेटिव सेल, दूसरी को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं. तो यहां तक हमने बात की मेल जो हमारे पास एंथर है, फिलामेंट है, किस तरह वो पोलन ग्रेन बनाते हैं. इसको यहां पे ही छोड़ेंगे. अब मैं इसको ले लूंगा. इसको मुझे रब करना होगा यहाँ पे. जो हमारे पास ये फीमेल गैमीटोफाइट फीमेल है, आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलेगी. इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको मिलेगी. दिस इज आवर ओव्यूल. जो मैंने यहां पे लिखा है, यहां पे इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया होंगे. तो फिर से मैं बता दूं, इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं. एक किस्म का टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसिलस. न्यूसिलस टिश्यू होता है. और इसी न्यूसिलस में से कोई भी एक सेल मेगास्पोर का काम करेगी. मेगास्पोर का काम करेगी. फिर मेगास्पोरेंजिया में जो होगी इसके अंदर बनेंगे मेगास्पोर्स. मैं यहाँ पे फिर से बना दूं आपका ओव्यूल. ये हमारा ओव्यूल बन गया. इसके पास ये इंटेगुमेंट्स है. दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल पार्ट एंड द चाइलेजा पार्ट. ये चीजें हमने यहाँ डिस्कस नहीं करनी है. तो इसके अंदर एक मेगास्पोर का रेंजिया जो है, इसी न्यूसिलस का जो है वो बनाएगा 4 मेगास्पोर्स से मियोसिस करके 4 हमारे पास मेगास्पोर्स आएंगे. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इन्हीं जो मेगास्पोर 4 आ गए, 3 हमारे पास क्या होंगे बेटा, डिजेनरेट, और एक ही रह गया फंक्शनल. फिर ये फंक्शनल जो हमारे पास मेगास्पोर है, ये क्या करेगा, ये करेगा काम. दिस इज फ्यूनिकल प्लेसेंटा व्हाटएवर, आपको वो चीजें नहीं जाननी है. ये हमारे पास आएगा फिर से ओव्यूल. और ये वाला जो हमारे पास मेगास्पोर है, ये बनाएगा हमारे पास एम्ब्रियो सैक. दिस वुड फॉर्म एन एम्ब्रियो सैक. सो
इस एम्ब्रियो सैक में क्या होगा, समझ लेना पूरी बात को। मैं कहां से क्या कर रहा हूं, यहां से ले रहा हूं इसको, दिस वन, देन लाइक दिस, then this, and again I would like to go here. I don't want to rub it, क्योंकि आपको पूरी तरह समझ आना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास ये हमारा ओव्यूल है, इसके इंडिक्यूमेंट्स हैं, और इसके अंदर हमारे पास क्या बन रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास बन गया एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सैक। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। जैसे यहाँ पे पोलन सैक बना था, वही इसी यहाँ पे बनेगा एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के पास 7 सेल्स होती हैं, 3 सेल्स यहाँ पे होती हैं जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स 3 होती हैं, ये कुल 7 सेल्स होती हैं। बीच में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, या बोलेंगे हम N+N। और नीचे हमारे पास होते हैं 2 सेल्स और एक एग सेल। ये वाला हमारे पास है, इनको हम बोलेंगे सिनर्जिड्स। हमारे पास 2 सिनर्जिड सेल्स होती हैं और हमारे पास एक एग सेल होती है। जरा इनको काउंट करेंगे आप, 3, 4, 5, 6 और 7। तो एग सेल को लेके हमारे पास 8 प्री न्यूक्लिएट स्टेट स्ट्रक्चर्स होती है। तो आपको क्वेश्चन में आएगा कितने होते हैं एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो सैक में आप बोलेंगे 7+1 और 8 बोलेंगे। 7, 3 है एंटीपोडल सेल्स, 2 है पोलर न्यूक्लियाई, 2 है सिनर्जिड सेल्स और एक हमारे पास है एग सेल। तो ये इसको मैं रब करना चाहूंगा क्योंकि आपको समझ में आया होगा। अभी हमारे पास ये वाली ओव्यूल है जिसके पास हमारे पास बन गया एम्ब्रियो सैक। तो यहां पे फिर से मैं बना दूं, ये हमारे पास 2 इंटेग्यूमेंट्स हैं, फ्यूनिकल then ovary. We do have inside this embryo sac, एम्ब्रियो सैक के पास हमारे पास ये सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स, 2 न्यूक्लियाई हैं, क्लियर। यहाँ पे 2 सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है। समझ लेना पूरी बात को। अगर मैं यहाँ पे बना दूं फिर से अपना पिस्टल में बनाना चाहूंगा, तो ये हमारे पास है पोलर न्यूक्लियाई, ये हमारे पास है एग सेल। यहां से पोलन ग्रेन इधर आ गया विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंट्स, विंड से आ गया, इंसेक्ट से आ गया, बर्ड से आ गया, और जो हम पॉलिनेशन जिसको हम बोलेंगे। तो मैं बता दूं यहाँ पे ये पोलन ग्रेन हमारे पास आ गया जिसके पास ये वेल डिजाइनड स्ट्रक्चर है। लेकिन मैंने आपको बताया था एक जगह पे इसके पास हार्ड कोटिंग नहीं होती है जिसको हम जर्म पोर कहते हैं, और जर्म पोर से ये वाली सेल जो है वेजिटेटिव सेल, ये बनाती है पोलन ट्यूब। इसने क्या बनाया बेटा, पोलन ट्यूब बना दिया। और ये हमारे पास था, इसके अंदर एक इलोंगेटेड स्पेंडल शेप्ड सेल, दिस इज स्पेंडल शेप्ड इलोंगेटेड सेल इसके अंदर जो थी। इसने क्या की, इसको हम करेंगे यहाँ पे माइटोसिस। तो माइटोसिस से इस ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट्स बन गए। यहाँ पे माइटोसिस, जनरेटिव सेल की माइटोसिस हमने करी और 2 मेल गैमीट बन गए। ऑन जर्मिनेशन यहाँ पे
जर्म पोर से इस जर्म सेल ने पोलन ट्यूब बना दिया, वो बिल्कुल ओवरी पे जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 मेल गैमीट लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक मेल गैमीट इस एग को फर्टिलाइज करेगा और एक मेल गैमीट इसके साथ मिलके बनाएगा, ये बनेंगे n प्लस n प्लस n। समझ लेना पहली बात, फर्स्ट मेल गैमीट फर्टिलाइजेज, उसने किसको किया फर्टिलाइज, एग को। जब उसने फर्टिलाइज एग को किया तो वहां पे रिजल्ट आ गया जाइगोट। जाइगोट जो बन गया हमारे पास, जाइगोट जो है इसको हम कहेंगे हम सिनगैमी। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सिनगैमी। एक मेल गैमीट ने एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना दिया, जो हमारे पास बाद में क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो, और इसको हम बोलेंगे सिनगैमी। तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन हो गई, जो दूसरा मेल गैमीट आके इसके साथ मिलके बनाएगा उसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, ऑलरेडी हमारे पास 2 n+n थे न्यूक्लियाई। अब ये मेल गैमीट जो हैप्लॉइड हमारे पास मियोसिस से बन गया, क्योंकि पोलन ग्रेन जो बन गया हमारे पास मियोसिस से, या माइक्रोस्पोर बन गया मियोसिस से, तो एक और n इनके साथ मिल गया, तो ये बन गई ट्रिपल फ्यूजन, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। क्लियर, ट्रिप्लॉइड। और ये बनाते हैं जिन चार माइक्रोस्पोर को बोलते हैं हम टेट्रॉइड बनाते हैं, और ये बहुत देर तक रहते हैं, क्योंकि मैंने बोला आपको पॉलिनेशन से लेके फर्टिलाइजेशन तक बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यहां पे बेटा एक मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन करके जो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड बन गया, ये हमारे पास बन गया एंडोस्पर्म। तो यहाँ का एंडोस्पर्म क्या है बेटा, ट्रिप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म था हैप्लॉइड, ये चीज याद रखेंगे आप। तो एंडोस्पर्म यहाँ बन गया। फिर मैंने बोल दिया कि एंडोस्पर्म ये सारा कंज्यूम करता है फॉर नरिशमेंट, लेकिन उसके बाद कहीं कहीं पे एंडोस्पर्म रह जाती है। तो यहाँ तक हमने समझा, पहली फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जाइगोट। दूसरी फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, एंडोस्पर्म। तो इसको और इसको लेंगे हम, दोनों को क्या बनेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ये याद रखेंगे। फिर यहां पे आएंगे हम, जब हमारे पास जो ये जाइगोट बन गया, तो जाइगोट हमारे पास बनाएगा एम्ब्रियो, ओवरी हमारे पास बनाएगी फ्रूट, और ओव्यूल्स हमारे पास बनाएंगे सीड। तो ये बटा होगी सीड के अंदर, सीड के बाहर ये कवरिंग है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। सो फार एज देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कंसर्न, आपको पता ही है कितने फ्रूट्स, लकड़ी वगैरह सब कुछ, बहुत सारी चीजें हम इन्हीं एंजियोस्पर्म से हासिल करते हैं। एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, सारी चीजें हम इन्हीं एंजियोस्पर्म से हासिल करते हैं। सो इनके साथ चिनार वगैरह, इनके साथ फ्रूट प्लांट्स, इनके साथ फ्रूट ट्रीज, वी डू हैव वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। As nowadays it is a trend that Italian whatever etc. So you know the rest, their economic importance, it is so easy to know. Now we have completed the kingdom planty part. Inshallah in next video we will take the next chapter, anatomy of flowering plants.